Hello students, hope you are all right. So once again, welcome back to my English class. Today we are going to start LP2 notes. You will be able to make notes by compressing sentences. आप sentences को compress करके उनको छोटा करके आप notes बना पाएंगे. Okay, now let's have a look at the sentence. Braille, blind, went to school, developed alphabet for blind, blind could read and write. Okay, what do you understand from these phrases? इन phrases से आपको क्या समझ में आता है? We understand that Braille was blind. He went to school where he developed the alphabet for the blind that helped him read and write. कि ब्रेल जो है लुइस ब्रेल वो ब्लाइंड था, वो स्कूल गया, वहाँ पे उसने अल्फ़ाबेट डेवलप किया जिससे ब्लाइंड लोगों को पढ़ने और लिखने में हेल्प मिली. सो दीज फ्यू कंप्रेस सेंटेंसेस समराइज हिज इम्पोर्टेंस फॉर द वर्ल्ड. वी राइट कंप्रेस सेंटेंसेस वाइल मेकिंग नोट्स ऑन अ टॉपिक. जब हम किसी टॉपिक पे नोट्स बनाते हैं तो हम पूरे पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखते हैं, कंप्रेस्ड सेंटेंसेस लिखते हैं. We write compressed sentences while making notes on a topic. While making notes, we compress the key ideas into short phrases. Key ideas को हम short phrases में point out करते हैं. So tell me, how can we compress the key details? By the age of 4, he lost sight in both his eyes. If we had to make notes, अगर हमको notes बनाने पड़ते इस sentence के बारे में, like by the age of 4, he lost sight in both his eyes, तो कैसे हम बनाते हैं? So we can compress it into lost sight at 4. Short में हम क्या लिख सकते हैं? Lost sight at 4. So today we will learn how to write short phrases to make notes. So our notes can be for the key details. Blind cannot read and write. Lost sight at 4. Did well at village school. Reading raised wooden letters was not easy. Introduced to a secret army code without light or sound. Improved code for the blind. Published the Braille alphabet. Braille system spread. And devised a typewriter in Braille. So how do we make notes and why is it important to make notes? हम notes कैसे बनाते हैं और notes बनाना क्यों ज़रूरी है? We make notes by compressing information into short sentences और phrasing. हम information को जो है compress कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं. Although short, they give us all the important information. हालांकि वो छोटे होते हैं लेकिन सारी की सारी information हमें मिल जाती है जो important होती है. For example, these 10 short sentences or phrases give us all the important information about Louis Braille's biography. जो अभी मैंने आपको शॉर्ट फ्रेजेस बताए थे, इससे हमें बायोग्राफी की पूरी समरी पता चल जाती है. टू कंप्रेस इन्फॉर्मेशन इनटू शॉर्ट सेंटेंसेस और फ्रेजेस, वी पिक द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स इन द की डिटेल. हम सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स को उठाते हैं, जैसे कि बाय द एज ऑफ 4 ही लॉस्ट साइट इन बोथ हिज आइज. सो हमने लिख दिया लॉस्ट साइट एट 4. We omit the unimportant words while making sure that they don't affect the meaning and rules of punctuation. और हम जो unimportant words होते हैं उनको omit कर देते हैं, remove कर देते हैं. We actually use a verb-noun combination to compress sentences. Verb-noun का combination use करते हैं. Notes help us to retain information and get an overview of the topic. We use compressed phrases when we need to make notes. और नोट्स हमारी हेल्प करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिटेन रखते हैं. जब भी हमें रिवाइज़ करना है कुछ, हम बस ज़रा नोट्स को देख लेते हैं तो हमें पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाता है. सो कैन वी यूज़ नोट्स और दी शॉर्ट सेंटेंसेस टू एक्सप्लेन एन इवेंट इन सम डिटेल? हाउ? क्या हम इन शॉर्ट नोट्स को या कंप्रेस डिटेल्स को यूज़ कर सकते हैं किसी इवेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए? Yes, we can use notes to explain an event in detail. One important thing that notes do is trigger the recall button in our minds about a particular topic or event. कि notes क्या करता है, important thing कि जो हमारे माइंड में पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाता है, रिकॉल हो जाती हैं सारी चीज़ें. फॉर एग्जाम्पल, although the compressed sentences tells us what happened in Brill's life, they set off the details about how it happened in our minds. कि नोट्स ने हमारी हेल्प की कि ब्रिल की लाइफ में क्या हुआ, लेकिन तभी हमारे माइंड में रिकॉल हो गया कि ये सब
कैसे हुआ, because that is what each of the paragraph talk about. Now take out your worksheet at page number 6, notes. टिक द टाइप ऑफ सेंटेंसेस यू शुड यूज़ वाइल मेकिंग नोट्स. जब आप नोट्स बनाएंगे किस टाइप के सेंटेंसेस यूज़ करेंगे. ही डेवलप्स, सब्जेक्ट तो हम लेते ही नहीं है तो ही वाला आएगा नहीं यहाँ पे. सो बी एंड डी वुड बी करेक्ट. डेवलप्स अ ब्रेल टाइपराइटर एंड डी इंस्पायर्ड मैनी लाइक हेलन केलर. Now make notes for these sentences. Louis became a teacher at his own institute for blind children and used the Braille system to help his students. So used Braille system for teaching, or you can also write became a teacher and used Braille system to help students. The school had 14 such books. Louis set about reading all of them. Louis read 14 books. He used Barber's code system and made it easier and more efficient to use. Made Barber's code easier and efficient. He often used sharp tools to cut and punch holes in the leather. One of the tools he used to make holes was a sharp awl. Sharp awl used to cut and punch in holes the leather. Use the node lost his sight Louis Braid biography to explain the event it's talk about. Blind people can't read and write, lost sight at 4. He did well at village school, developed Braille alphabet, spread Braille system, devised the typewriter in Braille for blind people.